A new day breaks over our city. For some, this will be the first day of a terrifying new reality. They will experience indescribable pain from burn injuries, loss of limbs, scarring, damaged organs, and overwhelming psychological and emotional distress. These men, women, and children will be brought to the burn center. Tucked away in a corner of the civil hospital, this beautiful old building is like an oasis of calm in a chaotic and congested neighborhood. It is also the only specialized burns unit for more than 20 million people in the city. Concentrated private sector and the public sector का joint project है। सन 2001 में यहाँ का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और 2004 में मुकम्मल हो गया और दिसंबर 13 तारीख को 2004 ऑफिशियली इफ्तिताह हो गए थे। Mortality rates are extremely high for burn injuries. Sepsis, shock, multi-organ failure, brain death, respiratory failure, and complications such as tetanus and hypothermia are common causes. The center routinely deals with all types and severities of cases. Its staff is trained for critical multi-system management, as well as reconstructive surgery and physiotherapy. The smell of scorched flesh and singed hair, the sight of raw skin, fused limbs, and faces dissolved by flames, these nightmarish scenes are part and parcel of the average day for those who work here. For them too, it is a trial by fire. Those already disadvantaged are most likely to suffer serious burns at their place of work, at home, and even whilst walking on the street. फ्रेंड्स, वो बर्न सेंटर 66 बेडेड हॉस्पिटल है जो कि एक्सक्लूसिव फॉर बर्न पेशेंट है। हमारे पास ओवरऑल सिंध से पेशेंट्स आते हैं। इसमें हर तरह के बर्न पेशेंट, चाहे वो इलेक्ट्रिकल बर्न हो, फायर बर्न हो, केमिकल बर्न हो, एसिड बर्न हो, उनका इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ 3 तरह की मेडिसिन आती हैं। एक थ्रू डोनेशन इन काइंड, एक हमें सिविल हॉस्पिटल CHT की तरफ से मिलती हैं कुछ मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ आवर डोनर एंड इंडस हॉस्पिटल। हमारे यहाँ ब्लड, जहाँ जितने भी पेशेंट्स हैं उनको ब्लड 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा होता है। ये हमारी एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बना हुआ है जिसमें जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइमिंग्स में जाके अपनी एक्सरसाइजेज होती हैं जिस भी तरह की होती है वो हमको ज़रूर कराई जाती है और उस पर ख़ास हमारा जोर होता है कि इस पर रिहेबिलिटेशन के ऊपर ज़्यादा काम किया जाए। हमारे पास यहाँ डिफरेंट बच्चे आते हैं जो कि बर्न्स के साथ आते हैं और बर्न की भी काफ़ी हद तक डिफरेंट कैटेगराइजेशन है। जैसे कुछ हमारे पास गर्म पानी के जलने से आते हैं जिसे हम स्कार्ड बर्न कहते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक बर्न के साथ आते हैं जब 11,000 वोल्ट के झटके उनको लगते हैं, उस बर्न्स के साथ भी आते हैं। कुछ बच्चे हमारे पास डायरेक्ट फायर बर्न्स के साथ आते हैं। Umar's case is one example where an 11,000 volts high tension wire snapped and fell on him. This bright, active 9-year-old was brought to the center with acute 3rd-degree burns. Saving his life meant amputation of both arms. ये उमर की वालदा है। ये 9 साल के हैं। दोनों बाजू उनके पूरे जल चुके थे और डॉक्टर ने इनका एम्पुटेशन करके इनको किया और बहुत अच्छा मतलब इलाज होता है यहाँ पर। बहुत केयर की, सारे डॉक्टर ने बहुत कोऑपरेट किया। हमारे मतलब साइकिलिंग बहुत करते थे, क्रिकेट खेलते थे और ड्राइंग का बहुत शौक था इनको और इंशाल्लाह ये कहते हैं कि मैं अब कुछ करके दिखाऊंगा मम्मा। From January to June this year, more than 10,000 OPD cases have been brought to the center, of whom a huge 40% were children. पतंग उतारने के लिए चढ़ा था, वो 11,000 में सरिया डाल दी, करंट लगा, यहाँ पर आया, इन्होंने पट्टियाँ करते हैं, रोटी में जाता हूँ, अभी सही हो गया हूँ पहले से। घर तो बहुत दिन हो गए, अभी घर की याद आ रही। In the first 4 months of 2019, 419 people with serious injuries were admitted, but only 211 survived. The most serious burns are often rooted in deprivation, such as electric burns, when victims are driven to steal electricity through illegal kunda connections. बर्न सेंटर तो सारे ट्रीटमेंट 100% मुफ्त में हो रहा है। हम तो बिल्कुल पैसे चार्ज नहीं करते हैं
hospitalization, consultation, treatment, drugs और फिजियोथेरेपी सारे फ्री में होता है। और इसका फंड कहाँ से आते हैं? ये सारे लोगों का गुडविल से होता है। मैं हैरान हो गया था कि पाकिस्तान के स्पेशली ये नोटिस किया है कि कराची में ऐसे लोग बहुत हैं कि लोगों को मदद के लिए हमेशा खड़े होते हैं। 95% of burn injuries worldwide occur in low-income countries. According to a WHO report, 70% of the victims in South Asia are women. Women are more likely to suffer acid burns. Often, this is at the hands of men who react to feelings of anger, rejection, or frustration by disfiguring their targets. Women also have higher rates of suicide attempts by setting themselves on fire or by ingesting chemicals. Because they cook on ill-equipped stoves, they suffer more scalding accidents. I was watching the stranded people. The fire was raging. People were jumping from the top floor. Pakistan is more gender neutral in burn statistics. Safety standards in many small factories and places of work are almost non-existent. This leaves low-level workers in factories and workshops, overwhelmingly male, at greater risk of chemical and thermal burns as they work in unsafe and largely unregulated environments. There have been many cases where hazardous, untreated waste material was dumped in open areas and the matter hushed up after small compensations to victims. My name is Nadir Aziz. I am a student of Karachi Grammar School and have spent this summer at the Burn Center. I have learned many things here, and not just about the medical aspects of treating burn injuries. The center can only deal with the symptoms, but not the cause of the abnormally high burn statistics in our city. The unending flow of laborers, women who have no control over their lives, and defenseless children will not stop unless we change the very way we think and behave. If you want to help, send your donations to the Burn Center. Visit them and see some of the most positive aspects of our society. The selfless generosity of donors that keeps this valiant center running, and the strong will and courage of survivors. This is where you can reach the Burn Center and donate online. www.burncenter.org/donation. You can also send a check payable to Friends of Burn Center.